welcome to my channel Instant Maths by DD Kadam. Today we are going to conduct some questions of standard 10 to prepare for exam. Now see the question. Question number 1. यहाँ पर triangle is given A, B, C. In this triangle there are two triangles also. Triangle ADB and triangle ADC. What is given in the question? See now. D is a point on side BC such that B dash D dash C. What is mean that? That means B, D, C all 3 points are collinear. कोलिनियर का मतलब होता है जिन तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन पे होते हैं. दैट मीन्स 3 पॉइंट्स lie on a common line are called collinear points. See now, B dash D dash C, B D C, they form the one line which is the side of the big triangle. Okay, and find the ratio of, see the name, first triangle ABD, where it is ABD, and second ADC, here it is. Okay, both triangles are here, and in both triangle do the clear observation. One point A is common, which is here at the top. It means both triangles height is same. यहाँ पर हाइट उन्होंने दिखाई नहीं है. हाइट कैसे होती है? जब यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है तब इसको हाइट बोलते हैं. हाइट दिखाई नहीं है. आप चाहे तो इन दोनों को एक टेम्पररली हाइट भी दिखा सकते हो, लेकिन आप सिर्फ इतना भी बोल सकते हो कि अभी ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए. और आप इतना भी बोल सकते हो कि सिर्फ उसका वन वर्टेक्स कॉमन है. इट मीन्स दैट दे हैव अ कॉमन हाइट. ओके, नाउ सी ट्रायंगल ABD and triangle ADC have one vertex common, कॉमा करके आपने लिखना है which one it is. It is A. So now it means that triangle ABD and triangle ADC have कॉमन हाइट. और जब दो ट्रायंगल्स की हाइट कॉमन होती है तो उनका रेशो बेस के रेशो के इक्वल होता है. मतलब टू ट्रायंगल्स जिनकी हाइट सेम है उनका रेशो उन्हीं के करस्पॉन्डिंग बेस के रेशो के साथ होता है. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू BD अपॉन DC. यू सी नाउ BD एंड DC. अगर प्रॉपर्टी बोलनी हो तो एरिया ऑफ रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन हाइट इज इक्वल टू रेशो ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग बेस. आप चाहे तो फुल प्रॉपर्टी लिख सकते हो, नहीं तो सिर्फ रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस, सेम हाइट इट इज. ओके, तो यहाँ पे हमने रेशो लिखा है बेस का. तो बेस है पहला BD, दूसरा बेस है DC. तो पहला जो बेस है वो है 3, दूसरा जो बेस है वो है 5. सो इट इज़ 3 अपॉन 5
in the form of ratio 3:5. Second question, in right angle triangle PQR, राइट एंगल ट्रायंगल PQR में इफ अगर हाइपोथिनस PR इक्वल टू 12 एंड PQ इक्वल टू 6, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल P। ये क्वेश्चन करने के लिए पहले यहाँ पर उन्होंने दिया है राइट एंगल, तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की डायग्राम निकाल लूँगी बच्चों। नाइन्टी आ गया है, पर अभी 90 आप कैसे डिसाइड करोगे, तो सी हाइपोथिनस क्या दिया है उन्होंने, हाइपोथिनस इज PR। अगर हाइपोथिनस PR है तो हम जानते हैं कि हाइपोथिनस के आगे का यानी कि अपोजिट एंगल ऑफ हाइपोथिनस इज 90 डिग्री। तो देख लो ज़रा, PR का सामने का एंगल होता है एंगल Q, इसीलिए मेजर ऑफ एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद उन्होंने हमको और एक चीज़ दी है, PR इज 12 एंड PQ इज 6। अभी इसकी कंसेप्ट समझने के लिए मैं फिर से एक डायग्राम आपके सामने निकालूंगी। ए भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें मैं ऑलरेडी यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री ऐसे एंगल ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमें 30, 60, 90 का थ्योरम देखना है। ये थ्योरम हमको क्या बताता है, तो चलो मैं इस ट्रायंगल को नाम दे देती हूँ, कुछ तो भी अलग नाम देती हूँ ताकि आपको इसका समझ में आ सके, X, Y, Z। अभी किसी भी ट्रायंगल की अपोजिट साइड कैसे होती है, ये 30 के सामने की साइड है, इसे कहा जाता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल 30। तो 30 के सामने की साइड कौन सी है, XY, जो कि हाइपोथिनस, अभी हाइपोथिनस कौन सा है देखो, XZ, हाइपोथिनस XZ, और 30 के अपोजिट की साइड कौन सी है, XY। तो जो 30 के अपोजिट की साइड होती है वो हमेशा हाइपोथिनस के हाफ होती है। ध्यान रखना बच्चों, इस पर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। 30 डिग्री के अपोजिट की जो साइड होती है वो हाइपोथिनस के हाफ होती है। सेम लाइक दिस, see 6 is half of the 12, so I got it angle R is a 30 degree। but wait, see अगर यही एंगल 60 डिग्री रहा तो 60 के अपोजिट साइड कौन सी हो गई, YZ। ये साइड भी हाइपोथिनस XZ के √3/2 टाइम्स होती है। इस ऐसा होता है 30, 60, 90 का थ्योरम। तो ठीक है, ये थ्योरम मैंने आपको क्यों एक्सप्लेन किया, दैट बिकॉज आई वांट दिस मेजर ऑफ एंगल। तो इसका रिलेशन मैंने आपको दिखाया कि ये जो साइड है 6, इट इज़ अ हाफ ऑफ द 12, मतलब PQ इज हाफ ऑफ द PR, सो इट्स अपोजिट एंगल इज 30 डिग्री। ओके, वेट स्टूडेंट्स, see now then 6 is half of the 12, तो 6 माने PQ, 1/2 and 12 मतलब PR। so measure of angle R equal to 30 डिग्री। इसको आपको रीजन देना होगा,
converse of 30, 60, 90 degree theorem. ओके, इसके बाद में बच्चों अभी देखो, ये तो पूरा एक ट्रायंगल है और हम जैसे कि जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम होती 180। 180 में से 90 चला गया, ये 90 गया तो दो एंगल जो बचते हैं उसका मेजर एडिशन होगी 90, उसमें ये 30 हो गया। सो एंगल P विल बी श्योर एंड श्योर इट इज 60, पर हमें इसको लिख के बताना होगा। तो नाउ सी, इन ट्रायंगल PQR, measure of angle P plus measure of angle Q plus measure of angle R is 180 degree, because we know sum of measure of angle of triangle is 180 degree. So P I want to find, Q is the 90 opposite angle of hypotenuse, R I already concluded 30. So 90 plus 30 120. 120 उस साइड में शिफ्ट हो गया, प्लस था तो माइनस गया। सो मेजर ऑफ एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही क्वेश्चन अगर आपको 1 मार्क्स के लिए आया तो आपको सिर्फ ओरली कंक्लूजन करना है। 6 12 6 हाफ है, सो इट्स अपोजिट एंगल इज 30 एंड देन माइंड में ही आपको एडिशन का कैलकुलेशन करना है कि ये 90 गया तो दोनों का 90 और 60 ऑप्शन को आप 1 मार्क्स के लिए टिक कर सकते हो। सो बच्चों, दिस इज आवर सॉल्यूशन। Question number 3. Quadrilateral PQRS is a cyclic quadrilateral. If angle QPS equal to 110 degree, then find the measure of angle QRS, give reason. First of all, students, we see what is meant by cyclic quadrilateral. Already we know that quadrilateral has 4 vertices P, Q, R, S. When these vertices are lie on a circle, then such a quadrilateral is called a cyclic quadrilateral. So PQRS is a cyclic quadrilateral. It is our given statement. So we start from it. PQRS quadrilateral is a cyclic quadrilateral. Okay, they give this quadrilateral is cyclic because we know the property that opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary angles. Means this angle and this angle. This is the pair of opposite angle, and second pair is this one and this one. Okay. Both are not equal, but both are supplementary. Now see the first property. Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. Again, we should think about the word supplementary. What is meant by supplementary? Meaning those pair of angles whose sum is 180 degree is called supplementary. यानी कि जो हम अभी मैंने आपको बोला अपोजिट एंगल्स की पेयर, तो उनकी एडिशन अगर 180 डिग्री होगी तो उसे सप्लीमेंट्री कहेंगे। पर यहाँ पर ऑलरेडी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, यानी कि उनके अपोजिट एंगल शुड बी सप्लीमेंट्री, उनकी सम 180 होनी ही होनी है।
तो यहाँ पर और एक एंगल दिया है, एंगल QPS इक्वल टू 110. Now see, measure of angle QPS plus measure of angle QRS equal to 180 degree. This is 110 is given. (110) shift that side, it goes in minus, and we got the answer. Measure of angle QRS equal to 70 degree. It is our final answer. Question number 4. If 2 sin theta equal to 5 cos theta, then find the value of tan theta. Here given statement is 2 sin theta equal to 5 cos theta. Our question is find the value of tan theta. Now start from the given content. 2 sin theta equal to 5 cos theta. Now see, we already know that tan theta means sin theta upon cos theta. So sin theta is at the numerator place. Sin theta should be at numerator place. So sin theta is keep at here and shift the cos theta at the denominator. It is in that multiply operation, it goes in the divide, and 5 it keep at numerator, and 2 which is in multiplied of the other side, it goes in the divide, and put the sin theta upon cos theta is a tan theta, and we got the value of tan theta equal to 5 upon 2. It's very easy question, students. Just you should learn the formula of tan theta. Okay, this formula should you learn, and you can calculate by this way. Question number 5. Complete it. यहाँ पर हमें कुछ फिलअप्स दिए गए हैं, उन फिलअप्स को हमें फिल करना है. sin square theta plus cos square theta equal to box empty place, डिवाइडिंग each them by cos square theta. तो जैसे कि हम हर टर्म को डिवाइड करते, सो sin square theta अपॉन cos square theta, cos square theta अपॉन cos square theta, एंड जो कुछ हमारा यहाँ आंसर होगा अपॉन cos square theta. So first of all students, I want to tell you some formula. Sin square theta plus cos square theta equal to 1. This is the identity, trigonometric identities. Sin square theta plus cos square theta equal to 1. According to this identity, we put the answer sin square theta plus cos square theta equal to 1. If there is 1, just keep as it is, and dividing by cos square theta, so sin square theta upon cos square theta, cos square theta upon cos square theta, so 1 upon cos square theta. Again there are some 2 boxes, empty boxes. I already explained you in the last example. Tan theta equal to sin theta upon cos theta. If I took the square of sin square, square of cos square, so it means that there is square of tan square. So see now, sin square theta upon cos square theta equal to tan square theta. And ये दोनों ये वाली आइडेंटिटी थी, ये वाला फॉर्मूला था. एंड नाउ सी द मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला ऑफ trigonometry. In this, we know that cos theta into
sec theta is equal to 1. It means that cos theta and sec theta both are multiplicative inverse of each other. Multiplicative inverse of each other. So, if I took cos theta which is in the multiply, it goes in divide. Sec theta equal to 1 upon cos theta. It means that sec square theta equal to 1 upon cos square. So, see now 1 upon cos square, it means sec square theta. So, by using this formula and additives and multiplicative formula, we solve this fill up. Question number 6. Find the length of the hypotenuse of a right angle triangle if remaining sides are 9 cm and 12 cm. So student, first focus on the word right angle triangle. So I draw the right angle triangle. Try it, give the name. Okay. Here angle B is 90, so hypotenuse is AC. Because I have already told you that opposite side of 90 degree is called hypotenuse. Opposite side of 90 degree is called hypotenuse. Also in question there is given the remaining sides are 9 cm and 12 cm. So put here 12 cm, 9 cm. See now then, let triangle ABC, because the names are given by us. Okay. Let triangle ABC be any right angle triangle with measure of angle B equal to 90 degree. Okay. Also BC equal to 12 centimeter and AB equal to 9 centimeter. So in a right angle triangle, directly we write by using Pythagoras theorem. What the Pythagoras theorem told? Base square plus height square equal to hypo square, मतलब hypotenuse square. Base means BC square. This is the bottom side. Then height square. And this is hypo AC square. So it is 12 square, 9 square, AC square. 12 square 144. It's 81. AC square. Do the addition 2 to 5. Taking square root. AC equal to 15 centimeter. So it is a word question. So write the answer in word. Length of hypotenuse is 15 centimeter. So easy question it is, students. Question number 7. Find the distance between the points. Points are given here and we have to find distance between these two points. For that, we have to take by using distance formula.
These 2 points are AB. So write here AB equal to under root x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. Where is the x1, where is the x2, where is y1 and where is y2? So I put here, this is the first point A. So give its coordinate x1 and y1. This is the second point. So give it the x2 and y2. Now see, just replace the values at proper place. x2, how much it is? 2. Minus x1, how much it is? 1. So it's bracket square plus y2 minus 5. Already here it is the 1 minus sign, so put it here. And y1 is a minus 3. Again here minus 3. So took the bracket square here. 2 minus 1 is 1 square here plus minus 5. Minus minus, both minus are here. So minus minus plus 3. One square is 1. Minus plus minus. So sign of bigger number and minus plus minus. So 5 में से 3 गया 2. Students confuse here. They write the minus 2 square is minus 4. But don't do mistake. Square of negative number is also positive. So write here only 4. And 1 plus 4 is our answer, root 5. Hello friends, next question is question number 8. Find the ratio in which point P67 divides the segment joining A 8, 9 and B 1, 2 by completing the activity. Let P divide the segment AB in the ratio m is to n. A.89 represent x1, y1. B.12 represent x2, y2. P67 represent xy. Bisection formula 7 equal to, it's as it is now. First of all, I explain you the section formula. Now see here. I draw a segment AB which has a coordinate x1, y1. B has a coordinate x2, y2. If any point P divide the segment in the ratio m is to n internally. Internally it means P point lies between A and B. Then coordinates of point P are mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1, m plus. It means it is the x coordinate of point P, it is y coordinate of P. At here, this side is 7 means it is y coordinate. So according to formula, 7 equal to my2 plus ny1 upon m plus n. I write here because this is the activity and these activity steps came directly. So I trying to tell you key from where this step came. Okay. So 7 equal to my2 plus ny1 upon m plus n. Now see 7. So here I have to put, this is y1, see right,
y1 9, y2 is a 2. So second step is here 7. This m plus n which is in divide, it goes in the multiply. Seven into m 7m, 7 into n 7n, here 2m. m at one side, this is plus 2m, it goes in the minus 2m minus 2m, and plus 7n goes minus 7n. 9 minus 7 2n, 7 minus 2 5m. This side n goes into divide, 2 is as it is at the numerator and 5 goes at denominator. What are the coordinates of the origin? What are the coordinates of the origin? Answer is 0 0. X coordinate is also 0. Y coordinate is also 0. Question number 10. The heights of triangle ABC and triangle DBC are 4 cm and 6 cm respectively. Find area of triangle ABC upon area of triangle DBC. Here give attention to the name of the triangle CABC. This is the one triangle and second triangle is DBC. Here BC and BC, one side is common. One side it should be base because heights are different. So it is base. So triangle ABC and triangle DBC have common base BC. So area of triangle ABC upon area of triangle DBC equal to ABC की height respectively 4 it is, DBC's height 6 because respectively first triangle ABC, so first height is 4, second triangle is DBC, so it is 6. Reason should be given. Triangles having same base. 2 2s are 4. Write in next step. 2 2s are 4. 2 3s are 6. 2 2 get cancelled. 2 upon 3, it means 2 is to 3. If you like my teaching, please like, watch, share, comment and subscribe my channel and also press bell icon. Thank you so much.